Write a program to calculate the electric bill according as follow. So number of unit and charges are given. If the unit consumed by the user is less than equals to 100, means till the 100, then 100 rupees he has to pay. Then the next 50 units, 2 rupees per unit has to pay. And then after that next 50s, then 3 rupees per unit has to be paid. And then after this, means if the unit consumes is greater than 200, then 5 rupees per units are to be paid. Okay, so see over here, till now we didn't get this type of the question, next. Okay, this next question we didn't get. What is the meaning of this next? First statement is very clear. If the unit is less than equals to 100, then bill equals to 100, right? If the unit is less than equals to 100, then bill equals to 100, right? Here I have declared one variable bill, and in the input I am taking the number of units. So bill will be 100. Now, else if, see the second condition. This next is written, this is known as slab system. Okay, next 50. Next 50 means what? 100 के बाद next 50 का मतलब 100 के बाद 50. तो 100 के बाद 50 means what? 100 plus 50 means 50 units next to the 100. So it will be 150, no? So next condition will be unit greater than 100 and less than equals to 150, right? Then 100 rupees to be paid. For what purpose 100 rupees to be paid? Tell me. For what purpose is 100 rupees to be paid? This 100 rupees for the first 100 unit, right? First 100 unit के लिए 100 rupees, see over here. Then उसके बाद जो 50 यूनिट रहेंगे उनके लिए 2 rupees पर यूनिट है ना. So that's why 100 rupees as it is. ये first 100 unit की calculation है. Then unit minus 100. ठीक है, 150 तक की यूनिट में से 100 यूनिट की कैलकुलेशन तो यहाँ पे हो गई. Then the remaining unit will be multiplied, will be calculated by 2 rupees per unit. तो remaining unit कैसे निकालेंगे? Unit minus 100. ओके, सपोज यूजर इज इनपुटिंग 120, तो 100 यूनिट का चार्ज तो 100 रुपीज ही देना पड़ेगा फर्स्ट 100 यूनिट का. देन उसके बाद रिमेनिंग 20 यूनिट का चार्ज 2 रुपीज के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा. देन हाउ वी विल फाइंड आउट दिस 20 यूनिट? यूनिट माइनस 100, राइट? देन द थर्ड कंडीशन, next 50 means after 150 next 50 is what? 200. So units greater than 150 and unit less than equals to 200, right? So first 100 unit की calculation 100 unit, then next 50 की यूनिट की कैलकुलेशन 50 मल्टीप्लाई बाय 2 पर यूनिट 2 रुपीज था ना. सो नाउ देखो 100 यूनिट की कैलकुलेशन ये हो गई, 50 यूनिट की कैलकुलेशन ये हो गई. अब रिमेनिंग यूनिट कितनी बची? यूनिट माइनस 150. तो यूनिट माइनस 150 जितना भी यूनिट आएगा उसकी कैलकुलेशन होगी 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, राइट? Then the calculation will be done by the 3 rupees. Then else is what? It is written greater than 200. Okay, so greater than 200 होगी तो 5 rupees per unit. तो 100 rupees, ये 100 यूनिट की कैलकुलेशन, ये यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई 150 तक की, ये कैलकुलेशन हो गई 200 तक की. ओके, 50 मल्टीप्लाई बाय 3.
तो ये 200 तक की कैलकुलेशन हो गई. देन 5 rupees पर यूनिट आफ्टर द 200. So unit minus 200 multiply by 5. And here I'm displaying the bill. So this is the bill. Okay, understood. Now the variable table. Only two variable I have taken over here, unit and bill. Both are integer, int. What is the description? To accept the unit from user, to store the bill. That is only, right? Clear? Let me compile the program. Okay. First of all, I'll comment them, variable tables. Variable table is necessary, compulsory in the program. Now here I'm compiling, executing. Electric bill. Suppose at the starting I'm giving 100 unit. Okay. Now see, 100 rupees only. Now 120. Okay, 120 होगा तो 100 यूनिट का तो कैलकुलेशन 100. देन 2 rupees 20 यूनिट का, राइट? तो कितना आना चाहिए देखो, 140. करेक्ट. 2 multiplied by 20 is 40 plus 100, 140. Right. Now I'm giving 180. See that, 290. Now I'm giving greater than 200, means suppose 250. So 50 rupees calculation, 50's unit per calculation will be 5 rupees per unit. So it will be 600. राइट? जब भी तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर बिल आता है, फोन बिल आता है, ऑल बिल्स आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस स्लैब सिस्टम्स ओनली. उनके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, बट लाइक दैट ओनली. तो सेम प्रोग्राम्स बनाए हुए होते हैं वहां पर. अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्राम्स उनका बिल कैलकुलेट होकर के आता है. राइट दिस प्रोग्राम विद द वेरिएबल टेबल.